बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं बहुत एक्साइटिंग कुछ करने जा रही हूँ एंड दैट इज इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कंट्रोल माई डे। मैंने कल ही आप लोगों को ऑप्शंस दे दिया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में। आज के वीडियो में आई एम गोना स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट और ब्रंच एंड दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट आई गेव यू गाइज। या आई जस्ट वोक अप बाय द वे, इफ यू कांट टेल दिस इज व्हाट आई लुक लाइक। आई एम लाइक सुपर ब्लोटेड, ब्रेकिंग आउट लाइक क्रेजी। ये तो एक डिफरेंट ही स्टोरी चल रही है यहाँ पे। फॉर ब्रेकफास्ट एंड लंच टुडे आई गेव यू गाइज टू ऑप्शंस। फर्स्ट इज nuggets and coffee and the second was eggs and coffee, and you guys voted for nuggets and coffee. I am so happy. I love me some nuggets and of course coffee. सबको कॉफी चाहिए होती है। मैंने चाय का ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि सुबह मुझे कॉफी चाहिए टू फंक्शन। So I'm gonna make some nuggets and coffee and that's gonna be my brunch. ओके सो दिस इज़ द नगेट्स दैट आई यूजुअली हैव। मेरी मम्मी ने ये बिग बास्केट से ऑर्डर किया है एंड आई विल हैव लाइक 3. सो हियर आर माई नगेट्स। आई थिंक आई डिड अ वेरी गुड जॉब एंड यू नो जले नहीं, सो दैट्स ऑलवेज अ गुड थिंग। एंड देन माई कॉफ़ी, पता नहीं अजीब सा क्यों लग रहा है बट या दैट इज़ माई कॉफ़ी, सम वाटर। हेलो हेलो हेलो। सो अभी मेरे तैयार होने का टाइम आ गया है एंड आई जस्ट हैड अ लिटिल बिट ऑफ फूड एंड नाउ आई एम सॉर्टेड फॉर अ लिटिल वाइल। सो मैंने आप लोगों को पूछा था कि मैं क्या आउटफिट पहनूँ आज एंड आई गेव यू 2 ऑप्शंस, एथनिक एंड कलरफुल बेसिक, and 51% voted for colorful basic. You guys really know me and मैंने black basic इसलिए नहीं बोला क्योंकि black basic में तो आप मुझे देखते ही रहते हो. So I wanted to give you guys a colorful option and I'm glad you chose that because I have a very cute top that I will wear and then I will also do my makeup and get ready. But अभी पहले मुझे नहाना है and I will do some pamper session because yeah, my body really needs it. So I thought I'll give you guys 2 scrub options. Mamaearth launched 2 new body scrubs, the Upton scrub and the neem scrub. This is what the Upton scrub looks like and आपने choose किया है Upton with 56%. You guys are Upton lovers like me. मुझे उनका पूरा Upton range बहुत पसंद है। मैं actually scrub को बहुत बार already use कर चुकी हूँ. This is what I'm gonna use today to just scrub my arms and everything. Okay, so for my colorful basic outfit I'm gonna wear this pink t-shirt. इसमें पता नहीं थोड़ा purple लग रहा है but it is pink and ये मेरा cocoa butter है that I will be using later. But yeah, this is a crop top from Zara and इसके नीचे I'll just wear घर के shorts. Okay, so I took my shower. I am all dressed. I'll show you guys my outfit later and I put on some earrings which I don't really like now but yeah, we'll see. So while I was showering I showed you guys that I used the Mamaearth Upton body scrub. This is what the little guy looks like. I've been using this for the past 2 to 3 weeks. This has turmeric and saffron and this is for tan removal. They also have a neem variant with neem and tulsi and this one is for skin purification. The thing is that we always take care of our face, मतलब face scrub कर लिया, face mask कर लिया, but body को हम बहुत ज़्यादा neglect करते हैं and I am guilty of that as well. So I've actively started taking care of it now. This is an amazing scrub you guys. It is very 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 gentle क्योंकि body scrubs का nature थोड़ा harsh होता है in general, so a lot of people cannot use it because they have super sensitive skin. You can definitely go for this because the entire consistency is like a cream and it has like tiny scrub particles that you just have to use on your wet body and जब आप इसको use करोगे you will just feel that it glides on your skin because of the creamy texture. It won't leave your skin dry, it will leave your skin super smooth and supple. This is for your entire body. I use it on my legs, my neck, my arms especially because मुझे arms and मेरे neck area पे ही सबसे ज़्यादा uneven tanning है and मैं इसको अपने legs, अपने stomach पे हर जगह इसको use करती हूँ especially before I shave. You can see my hands look really smooth. मैंने अभी तक moisturizer नहीं लगाया so this is right after I scrub. I really like the Upton range products. They suit my skin type really well for both face and body. It just leaves my skin super healthy and glowing and all of that. So this is something that I've been really enjoying these days and they have this neem variant also. Neem has like healing properties and stuff, so जिनको body rashes हो जाते हैं especially बारिश के मौसम में तो आप ये definitely use कर सकते हो and अगर आपको tan का issue है then आप Upton वाला use कर सकते हो. This doesn't even have that artificial overpowering smell
smell, so the smell is very subtle and they have no harmful chemicals in them. Now this retails for 499 rupees, but you can use my code anindita2020 on mamaearth.in and आपको 20% off मिलेगा. This is also available on Nykaa and Amazon, but my code only works on Mamaearth and it's not an affiliate code. I will not get any commission out of it. It's only for you guys. I've been loving Mamaearth के body and hair care products of late like the most. And I love to support Mamaearth because they're an Indian brand. They're also a PETA certified cruelty free brand for those who don't know. If you want to purchase these, I will leave a link in the description box below for you guys. Alright, so I'm almost ready for the day. मुझे बस अभी makeup करना है. So I asked you guys what kind of makeup should I do for the day, and I gave you two options. One is soft glam and the other is dramatic, and 59% of you chose soft glam. So that is what I'm gonna do. My skin has been going through a lot. Like I'm breaking out so much, it's not even funny, and I feel really conscious to be on camera without makeup. But yeah, I just want to keep it real with you guys. मेरे phases आते हैं कि बिल्कुल clear हो जाता है, फिर मुझे acne होता है, and it's weird because my skin is still oily but it feels very dry and it's just a mess right now. So मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रही. I'm gonna do very light makeup and I'm gonna start with prepping my skin. And मैं use कर रही हूँ ये Mamaearth का Skin Correct Serum. ये मैं अभी भी use करती हूँ and I just like using this because ये बहुत लाइट वेट है एंड मुझे लग रहा है ख़त्म हो गया ब्रेक. एंड आई जस्ट बेसिकली डोंट लाइक टू यूज़ एनीथिंग जिससे मेरी स्किन ना एक्स्ट्रा चिप करने लगेगी. सो आई एम जस्ट गोना यूज़ दिस ऑल ओवर माई स्किन. ओके, सो आई एम गोना यूज़ दिस इनसाइड कॉस्मेटिक्स का प्राइमर. आई लव दिस स्टफ सो मच. एंड मेरा नायका का प्राइमर ख़त्म हो गया. मेरी मम्मी ने उसको काफ़ी यूज़ किया है. सो what is this? What is this? What is this? I'm gonna apply some foundation. I don't know why मुझे इतना टाइम लगा ये वीडियो करने में. It's probably because पहले मैंने सोचा था कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा ये देखने में. So of late my vlogs are getting so much love from you guys. I feel a lot better after opening up to you guys. पहले मैं बहुत ज़्यादा reserved थी and I guess कि you know you guys were just looking for ways to connect with me. And I'm glad that I am able to do that now. And मुझे comfortable लगता है like to share things with you all. I'm gonna use some concealer. कल तो मैं थोड़ा जल्दी सो गई थी, and by जल्दी I mean like 3 o'clock, which is जल्दी for me क्योंकि पिछले थोड़े दिनों से तो मैं सुबह 6-7 बजे सो रही थी. I'm not even kidding. Like I've been sleeping at 6 AM. That is why you see my panda dark circles. You know, मेरे को थोड़ी इनसिक्योरिटी हो गई है to be honest. So I'm just waiting कि I will feel a little better about like my hair. Like I don't mind the short hair, but short hair maybe I know my bangs are not cut properly. So ये सब सोच के ना मुझे बहुत just I don't feel that good about myself right now. I'm gonna use my Too Faced palette because it has like a lot of softer shades and इसमें pinks and all है. So I'm gonna use these two shades पहले अपने crease में. I'm gonna use this pink shade all over my lid. Okay, for my waterline I'm gonna use the Nykaa Glamour Eyes Kajal and ये है Blue Hex. Filled in my eyebrows and I think मैंने ज़्यादा ही fill कर दिया, but what you gonna do? I'm gonna apply some mascara. बहुत ही थोड़ा सा. For lipstick, I'm gonna use the ColourPop Lippy Stick in the shade with the band, and then I'm gonna use this Maybelline liquid lipstick in the shade MLLB. And this is the final makeup look. I really like the pop of blue and I feel it adds a lot to the look. My signature warm soft glam look. I'm not gonna do anything to my hair. I have decided that I will just let it be for this video. मैंने इसको 2 दिन पहले straight किया था and I just don't think कि मुझे वापस इसमें heat डालना चाहिए. Quickly I'm gonna show you guys my outfit. So this is the crop top from Zara and I showed you guys this in my haul and मैंने घर के shorts पहन रखे हैं. So this is basically it. The earrings are from Shein and yeah, this is my OOTD. Hello. So अभी it is almost 8 o'clock and I am starving. मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं है, so I'm gonna eat something. And I gave you guys options कि पहले मैंने ऑप्शन दिया था पैनकेक एंड सैंडविच, बट मुझे
फिर पता नहीं सैंडविच खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था एंड आई वाज जस्ट लाइक आई डोंट इवन लाइक सैंडविचेस, तो मैंने सैंडविच का ऑप्शन ऐसे ही दिया था। मुझे लगा था कि लोग पैनकेक्स चूज़ करेंगे बट सब ने सैंडविच चूज़ किया था, सो आई डिलीटेड दैट। आई नो थोड़ी चीटिंग कर ली मैंने। एंड देन आई गेव यू गाइस अनदर ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन pancakes and noodles and you guys chose noodles with 71%। मुझे प्लीज़ बता दो कि आप लोगों को पैनकेक्स से क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी नफरत करते हो पैनकेक से, बिकॉज पैनकेक्स इतने टेस्टी होते हैं। मैंने बहुत टाइम से नहीं खाए थे बट चलो मैं नूडल्स बनाऊंगी। दिस वोंट बी लाइक नूडल्स फ्रॉम स्क्रैच, मैं मैगी या कुछ बनाने वाली हूँ। आई थिंक आई हैव टॉप रामन का कुछ, सो आई माइट मेक दैट समथिंग न्यू एंड मैंने खाया नहीं है उसको अभी तक, सो आई विल डू अ टेस्ट टेस्ट इन दिस वीडियो। I also have to make chai for mom, so I'm gonna do that. So Arsh got this top ramen ka curry flavor for me, so I think this is what I'm gonna make. मैंने कभी ये खाया नहीं है, hope ये अच्छा होगा। So while my food is cooking, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 मिनट्स लगेंगे। मैंने सोचा कि I'll show you guys some PR एंड मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि मेकअप एंड एक्सेसरीज के बीच में आपको कौन सा PR अनबॉक्सिंग देखना है एंड you guys wanted to see makeup, understandable. So I got this PR from an Instagram store called glam_destination. She has been sending me products for like 2-3 years now and literally the sweetest person ever. उनके पास बहुत different types of makeup है and they also sell Makeup Revolution at cheaper prices, ColourPop. She asked me what I want and I asked her to get this Makeup Revolution palette क्योंकि ये तब नायका पे available नहीं था। and उसके बाद क्या हुआ, मैं भूल गई कि मैंने उनको बोला था कि I want this palette and meanwhile my mom got the same palette for me, so now I basically have 2 of these palettes. I'm gonna give this to my sister because she also loves to do colorful eyeshadows. She also sent me this iMagic का blush palette and I wanted this for so long. इतना ज़्यादा pigmented है, like बिल्कुल ही आपको dip करना अपना brush and you will get so much pigment out of this. I have been using this a lot and I just absolutely love this. मैं ये दोनों शेड especially बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. And then she sent me ColourPop का lippy stick and this is what it looks like. This is the swatch of the ColourPop lipstick and you guys can see it's a very pretty coral pink type of color. This is a creamy matte and yeah, I really like the color. If you want some ColourPop affordable stuff, you can definitely go check out her page. मैं link दे दूँगी description box में. This is not sponsored by her or anything. I just really love her page. I've been getting makeup from her for a while now, so I just wanted to let you guys know. Alright, this is what the curry noodles look like. I think ये बहुत अच्छा लग रहा है. Let's do a taste test. I am starving you guys, like मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, so let's see how this tastes. थोड़ा स्पाइसी है बट लाइक गुड स्पाइसी, नॉट दैट रामन जो बहुत ही ज़्यादा इनएडिबल टाइप का स्पाइसी होता है। एंड या इट्स लाइक करी वाला जो इंडियन करी का टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल वैसा। इट्स एक्चुअली प्रिटी डिलिशियस एंड आई एम गोना ईट दिस। आई एम वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज, मुझे लगा नहीं था मुझे पसंद आएगा। बट सो आई आस्क्ड यू गाइस ऑन इंस्टाग्राम व्हाट शो शुड आई वॉच and if I should start something new or if I should just watch Grey's Anatomy like I always do, and majority voted for start something new. So while I eat this, I'm gonna watch BTS का new show that is In the Soup. उसका first episode आ गया है, so that's what I'm watching on Weverse right now. Okay, so I finally ate my noodles and मैंने In the Soup पूरा नहीं देखा because it's a long episode and I thought that I'll just end this video and edit this video. I'm sorry अगर मेरे specs में थोड़ा glare आ रहा था, so I removed it. But yeah, I'm super tired. Thanks to you guys, मेरा इतना productive दिन गया है. I also gave you guys another option कि मुझे IGTV video film करना चाहिए या फिर YouTube video and you guys chose YouTube. So thankfully I was filming a YouTube
video, and rather than starting another video I thought कि मैं इसी को full concentration से complete करूँगी. So yeah, I ended up doing that as well, and I just wanted to say thank you so much for participating and just voting. It means a lot to me कि you took out the time to vote and just make this video super interesting. It was very new for me but मुझे बहुत मज़ा आया. So thank you so much. I hope that you guys enjoyed watching this video. Don't forget to subscribe before you leave, and I will see you guys next time. Bye bye.